Okay, all the students should know that the recorded lectures are available only for 21 days. ये एक नई restriction है from Microsoft Teams. So if you want to download the videos, download them within 21 days of the lecture. Number one. Number two, उनका जो file size है, that will be at least 200 megabytes. I can talk about my lectures. अगर 1 घंटा 20 मिनट के हैं तो they are at least 250 MB से लेके 350 megabytes तक. So be patient. Allow the file to download completely and then play it. जो MP4 file है, let me write it here, कोने में MP4. This will be the format of the recorded lecture. जब तक ये complete download नहीं होगी, you will get corrupted file. Therefore, expect the file to be at least 200 megabytes. उतनी देर just wait for the download to complete. Okay, one thing that we should quickly discuss is that if we have a network, this is today's lecture, so let us draw a line here. छोटा सा concept है, you are already aware of it, so it shouldn't take us too much time. लेफ्ट पे इसकी बाहर ही गायब हो गई है. Okay, let me add a new page. लेकिन हम यही यूज करेंगे. Alright, so if we have a network जिसमें एक इनपुट है, and then it goes to two nodes. Let's call one of them F and the other one G. This is just a simple revision. Then both of them provide input to another node H, and then from H we get the output. Let's call it J. अगर हम इस नेटवर्क को देखें, then this input A is provided to the function F as a part. Let's say A subscript 1 कह देते हैं इसको, and A subscript 2 goes to G. Then F works on A1, कोई input इसको A1 मिल रही है, and that will be generated as output, and then simply the same thing will happen with G. It will convert A2 into some output. दोनों की output combine होगी, and then it will get as input to H. यहाँ अगर मैं लिख लूँ कि यहाँ जो आएगा, this will be a function of A1 and this will be A2. So this is how you will get the output J. Important thing to note, A1 and A2 are copies of each other. एक ही वैल्यू है जो कि दो जगह आप प्रोवाइड कर रहे हैं. Just like in programming, you can use the same variable, create its copies, and they get identical values. So A1 and A2 are identical values. The interesting thing to note here is that if we have to calculate the contribution of A, यहाँ इसके साथ मैंने कुछ सबस्क्रिप्ट नहीं लिखा, so this is the complete A, the input A. Then it is going to be a combination of two things. J में कुछ contribution आ रहा है from
the F node, and some contribution is coming from the J node. So what we can specify here is that J with respect to, पहले ये top वाला मैं लिख रहा हूँ, A1, and this gets multiplied with A1 A. A1 with respect to A, ये 1 होगा because these are the same things. But now comes the interesting part. इसी में हम add करेंगे. This is to be added. The contribution of J with respect to A2 and then A. So now you see these two things are added together. बीच में addition है, कुछ value आपको यहाँ से मिलेगी, कुछ यहाँ से मिलेगी, and both will be combined to give us the final output. और इसी को अगर हम extend कर दें, let's suppose we have got many intermediate nodes, F, G, H, multiple nodes in the hidden layer. एक input मिल रही है. I can simply extend this to give us this thing. Sorry. So this is going to be the contribution with respect to A1 plus, ये मैं इसको नोट नहीं कर रहा, copy, just know it that it happens, A2 plus until we get to the last neuron, ये जो node है, sorry, last node in the hidden layer, which could be A subscript K, and we can simply say there are one till K nodes in the layer. So I wanted to just emphasize on this point that if we have many such things, it will just be a combination plus 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 plus, add करते जाएंगे. In the end we will get the answer at the end. This thing will be very, very important when we are calculating the error coming from two different nodes. जो हमने last lecture में किया था, that was straight एक से किया था. Now we will be doing it with multiple nodes. So this is something that you should remember, और इसे हम यहाँ लिख लेते हैं so that you should not forget it. 1 से K तक हमने इसके सबस्क्रिप्ट बना दिए. All right. So let's suppose we have to calculate derivative of the sigmoid. Why do we need
derivative of the sigmoid. Ji, question I'm asking you people, why do we need सर to? सिग्मॉइड फंक्शन की कंट्रीब्यूशन चेक करने के लिए सर. Yes, because at the end of each of these nodes, जो भी हमारे पास calculation है, that gets converted by the sigmoid function. और sigmoid जो हम consider करेंगे अपनी example में, that is the simple one. Let's say e to the power z minus z. So this is the function we shall be using as the example. But before we go into the discussion, let us mark the attendance. इस वक्त कितने लोग हैं जी? We have got 29 students, so let us quickly have the attendance. Sharoz Hassan, sorry. Present, sir. Mohammad Shoaib, Present, sir. Usman Ali, Fareed Ahmed. Okay, Usman is present. Fareed Ahmed, Yes. Salman Badr, Usama Khalid, Amirun Nisa, Present, sir. Hamza Khalid, Present. हसनैन अली भी हैं, उस्मान जाहिद, Present. मोहम्मद अली हमजा, अब्दुल मनान, Present, sir. सर अली हमजा प्रेजेंट. सर वो ओ, ऑप्शन नहीं शो हो रहा था माइक ऑन का. कोई बात नहीं, अली हमजा इज प्रेजेंट. मोहम्मद कासिम, Muhammad Qasim present, sir. नोमान अजमल, Present, sir. महद हुसैन, Present, sir. दानियाल इरफान, Present, sir. Donor phone. उमैर तौकीर, Present. असफन जी, उमैर तौकीर, Present, sir. असफन खालिद, Present, sir. लुकमान अरशद, मिनाहिल मलही, Present. सैयद वलीद उमर, निमरा सईद, Present. अकबर हुसैन साबरी, Present, sir. हाफिज उजैर, प्रेजेंट सर. वर्दा अरशद, Present, sir. फातिमा शाहिद, Present, sir. मोइज रिजवान, अनीका इलियास, Present, sir. उमर सत्तार, Present, sir. हसन अली, हसन अली, कोमल वाजिद, Present, sir. अब्दुल्ला महमूद, Present, sir. हैदर अमान, Present, sir. एंड मुबशर हुसैन. सर स्टार्टिंग में उस्मान अली प्रेजेंट, वो मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो रहा था बीच में. ओके, Sir, Lukman Rashid present. उस्मान अली को पहले कर लें हम. उस्मान अली इज प्रेजेंट. अब आपने ओके कहा सर, थैंक यू. हाँ जी, लुकमान अरशद. Yes, sir. 0566. जी जी, प्रेजेंट. Thank you, sir. ऑल राइट, एनीबडी एल्स? So this is
the attendance for today. 30 के नाम आए हैं, 30 attend कर रहे हैं, चलें, this is encouraging. Okay, so we have to find the derivative of sigmoid so that we will be able to see how different neurons contribute and how the backpropagation is going to make use of it. If we have a situation, this is just a quick revision, so let me just call it recap. ये आप लोग कर चुके हुए in one of your courses, but I don't know if you remember. Let's suppose if there is a function in which let's suppose f of x this is one of my favorite examples, so I'm going to use the same terms. If you have such a function and you are required to find the derivative of f of x, इसे हम f prime x लिख लेते हैं. This is going to be what? ये हमारा quick recap है that we have a function both in the numerator and the denominator, and what we have to do is find the derivative of the whole thing. So we start from this point. Let me quickly do it so that we don't spend too much time on this. आपने जवाब तो देना नहीं है, so there is no fun in asking you the same thing again and again. So let's suppose we have two functions. One is g of x and the other is h of x. This is h, and we are supposed to differentiate this with respect to x. Then what we do is, याद रख लें पहले फंक्शन का डेरिवेटिव multiplied with the function in the denominator, numerator का डेरिवेटिव multiplied with denominator. इसमें से subtract करेंगे numerator multiplied with derivative of the denominator, and this whole thing will be divided by the denominator function squared. So this is a very simple formula जो आप लोगों ने definitely calculus में you have done it, you know it, but you don't know that you know it. So I'm just going to change the color क्योंकि ये formula हमने इस्तेमाल करना है. So if we apply the same thing on the example that we have, we say that
A is equal to g of x, and whatever is in the denominator is h of x, then another example, if we have g of x as a constant, if the numerator is a constant, मैंने k लिखना था वो साथ ही इसके पूरा ही हो गया, constant, let's suppose k, then the function will be something, कोई भी नाम उसका जो आपको अच्छा लगे, and it's going to be differentiated with respect to x. So same rule, we will have the derivative of k multiplied with the function in the denominator minus the k multiplied with derivative of the denominator and whole thing divided by square of the denominator. ये भी आपने देख लिया. So this is something again very interesting. Now the next point to note is that if the denominator is a function but numerator is 1. So if I say k is equal to 1, numerator is 1. Why do I take 1? Because basically we are going to be working with sigmoid. Numerator is going to be 1 or niche, it is again a function. Then what we will see is, what is the derivative of 1? Constant है, this is constant. Bracket में लिख लेते हैं. You know that derivative of any constant is 0. So 1 over derivative of 1 is 0 multiplied with h of x. ये पूरा ही 0 वैसे हो जाना, but it is better that we should write it. Minus 1 multiplied with the derivative of the denominator divided by square of the denominator. This term is simply going to disappear. 0 से multiply हो रहा है. So we can simply say that it is 1 से multiply करेंगे negative derivative of the denominator divided by the denominator square. So this thing in the pink color, magenta rather कहना चाहिए, is the recap. ये आप लोगों को याद कराना था. I hope you can recall it from your lectures on calculus and you can refer back to your Thomas Finney book if there is any confusion. I hope यहाँ तक सबको clear है. So I'm just going to draw a line here. This is a recap that if we have a function
in the numerator and denominator, then the derivative of that function is calculated like this. If we have numerator as a constant, and if the constant is 1, then this is what we get in the end. Now, applying the same thing to the all interesting sigmoid. ओके, आजकल क्या नाम है, अब्दुल मनान, आपने एक ईमेल की हुई थी रिगार्डिंग द वीडियो। मैंने वो पहले आपके आने से क्लास में अनाउंस किया है दैट MP4 फाइल इज वेरी वेरी लार्ज। जी बताएं मनान। वो सर आपकी मेल आ गई थी, वो मैंने पढ़ ली थी, मुझे समझ लग गई थी, तो मैंने वो डाउनलोड कर ली है। हाँ, मैंने उसी वक्त करके देखा था लास्ट लेक्चर, तो इट वाज अराउंड 311 MB के करीब था। सो एक्सपेक्ट दैट द फाइल विल बी मोर देन 200 मेगाबाइट्स, काफ़ी बड़ी फाइलें हैं। सो बी पेशेंट, उसको पूरा डाउनलोड होने दें, ओनली देन यू विल हैव द प्रॉपर फाइल। दरमियान में प्ले करेंगे तो वो जी, असल में नोटिफाई नहीं ना कर रहा था, तो इस वजह से कंफ्यूजन आ गई थी। ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आई डोंट नो बड़ा अजीब सा इन्होंने किया हुआ है कि डजंट टेल यू द टोटल फाइल साइज, वरना एक आइडिया हो जाता है कि हाउ मच हैज बीन डाउनलोडेड एंड हाउ मच इज लेफ्ट। कोई सर बात, वो टाइमिंग नहीं ना शो करता कि इतनी डाउनलोड हो गई है, इतनी रहेगी, नोटिफाई नहीं करता प्रॉपर्ली, तो इस वजह से थोड़ा मसला आ जाता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके जी, सो योर फेवरेट फंक्शन द sigmoid, let's suppose we have to differentiate it with respect to z. So there is another way of writing it. ये simple आप लोग कर चुके हुए हैं, दिस इज algebraic manipulation। अगर मैं इसको ऊपर लेके आऊं, then what happens is we just have to find out -1. Then with reciprocal rule, reciprocal rule क्या है? If we have a function and we have to take its derivative, that will be which is equal to -ux divided by स्क्वायर के साथ ना वैसे ब्रैकेट लगा लेते हैं so that it becomes clearer to you. I've done the same thing. यही बात मैंने वही फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ 1 multiplied with the other minus x minus the derivative of the denominator, the same thing has been done, but using your knowledge of calculus and reciprocal rule, and this is going to be negative. I can also bring this thing to the top, so it will become u of x, ये स्क्वायर था तो it will become -2. मैंने इसमें x इसलिए इस्तेमाल किया so that we don't get confused with z. I write z and 2 almost identically. So मैंने इसे खुद x कर दिया है in the example. This will be multiplied with the numerator, and that was ux. So यहां तक अगर कोई मसला नहीं है, so the next line is again from the top one. इसे हम कलर चेंज कर लेते हैं so that you can
look it up, green कर लेते हैं, and let's slightly reduce it in size. Okay जी, back to और ये न्यूमिनेटर में यूएफ का डेरिवेटिव नहीं आएगा? कहाँ से? ये जो आपने रेसिप्रोकल में लिखा है। Oh yes, very sorry, extremely ये yes, क्योंकि यहाँ जिस तरह हमने किया हुआ था, if you just consider this, बोल में रहा था but I wasn't writing it. Thank you for the correction. This will be the derivative of the function. All right, so now the same equation of the sigmoid, this will be using the same concepts that we have discussed here. Whatever was the function at the bottom, वो हम as it is लिखेंगे, and then -2 and this, and using the rule of linearity, this derivative then this will be equal to -1 अंदर वाला 1 प्लस up till now we have reached to this point. Carrying forward the thing that we have just seen, if we use the, let me change the color, using the exponential rule, it says that if we have e raised to a function, this is going to be equal to multiplied with this, your exponential rule. Keeping this in mind, we will have u to the power x, we will get e to the power minus z multiplied with of minus z. And this will give us minus 1 plus
e to the power minus z, and this is minus 2 multiplied with e to the power minus z multiplied with minus 1. So I'm just going to convert it back to the original state. We will get, ये पहले न्यूमरेटर लिख लेते हैं, e to the power minus z into minus 1. Right? Then शुरू में माइनस भी आएगा. So this is minus e multiplied with minus. So I can simply rule out this minus, and what I'll be left with is e to the power minus z over 1 plus e to the power minus z and square. I've just removed the minus. Minus e minus is plus. So we have reached until this point. Now बल्कि इसको एक और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. माइनस इंटू माइनस यहाँ से निकल जाएगा. सो दिस विल बी, चलें ठीक है, ऑल राइट. Let me save your attendance. Okay, the last calculation we have reached until this point. This, for my convenience, I can also write as 1 multiplied with e to the power minus z over 1 plus e to the power minus z and the square. Using this information, the last step is going to be 1 के साथ इसको डिवाइड करके अलग कर लें. 1 over 1 plus e to the power minus z multiplied with ये वाला multiplied. Now within the bracket, so these two are going to cancel each other. So we are left with 1 over 1 plus e to the power minus z multiplied with 1 minus 1 over 1 plus e to the power minus z. So if we just consider this thing in red color,
We have the sigmoid function here. We have the sigmoid function over here. And as per the notation used by many of the books and literature, if I represent the sigmoid with the symbol sigma, यहाँ मैंने कहीं लिखा नहीं हुआ, but let's suppose if sigmoid is represented with sigma, if then what I can write is derivative of sigmoid of x is equal to this, and this is just equal to the sigmoid यहाँ से multiplied with 1 minus the sigmoid of x. So this is now your final equation. I hope you have gone through this hairy mathematics. Khan Academy wala aise hairy mathematics karte hai, but you know it better and you have done it so many times that now it should be your second nature. An important point to note here, let's say I'm writing it as an important note क्योंकि ये आपने कभी ना कभी सवाल करना ही है, so I should answer it right now. If we have Z as input कर लेते हैं to sigmoid, then when Z is 0, sigmoid of Z is what? जी बच्चों, बच्चे सो गए जी. Hamza Khalid is still here. If Z is 0, then sigmoid of Z will be 1 over 1 plus e to the power 0. Anything to the power 0 is 1, which will be 1 over 2, and this is going to be 0.5. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Right? So when the input Z is equal to 0, the sigmoid of Z will be 0.5. This means that derivative of this will be ये वाली equation 0.5 multiplied with 1 minus 0.5. So 0.5 into 0.5 will be equal to 0.25. हाँ जी,
Is this thing clear to you? We have derived the equation, we have plugged in the values, and we have got this answer that if z is 0, sigmoid will give us 0.5. But if we take derivative of the sigmoid, that will be equal to 0.25. What does it mean? Let me write it in red color as the last line of this page. In backpropagation, the sigmoid and derivative of sigmoid result in vanishing gradients. Just note this thing, it is something very, very important. जब हम forward propagation में calculation कर रहे हैं, we got the answer 0.5. Back propagation में, when we take the derivative, everything is going to get multiplied with 0.25, जो भी value थी, which means that there will be loss of information. अगर इसका आपने कभी ग्राफ देखना है, तो for the simple sigmoid you had this kind of a graph, ये 0 है, so you would have 0 and going to 1. This is 1, this is 0. But when we have the derivative, you will get a totally different thing. It will start from 0. It will peak at this value, 0.25, and then come back again. So this thing is 0.25 वैल्यू आती है. यहाँ बल्कि मुझे लिखना चाहिए z is equal to 0 and you get the value 0.25 over here. इसे याद रख लें. The problem of vanishing gradients, इसका मतलब क्या है कि last layer पे जो error हमें मिलेगा when we communicate it back to the previous layers, it is going to get reduced and further reduced, resulting in a problem that the very initial शुरू की जो layers हैं उन्हें error की बहुत थोड़ी information आएगी. This is the problem of the vanishing gradients. And how is it solved? वो when the time comes, we will see and try to solve it. Oh, ये तो I wanted to make a selection. So this is something that you should never forget. Is it clear? So if you get a quiz and somebody asks you why does sigmoid and the derivative of sigmoid result in vanishing gradients, you just give the answer that if we have taken sigmoid of z and z was 0, sigmoid will give us 0.5. But when we have the derivative, sigmoid problem ये है कि maximum value it can give us is 2.5. इधर ही वैसे दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, एग्जांपल्स छोटी छोटी सी हैं. Let us do them right here. Okay, let's suppose
Z was 0. We got derivative 0.25. अगर मैं कहता हूं if Z is equal to 1, then sigmoid of Z क्या होगा? जी 1/1 plus e to the power -1. इसको सॉल्व करें एंड टेल मी द आंसर. सर 0.73 सर. But derivative of this ये क्या होगा? One multiplied with 1 minus 0.1971. है. किधर पहुंच गया लामा? ये मैंने ऊपर आपको ड्रॉ भी करके दिखाया है. जब z 0 है तो वी गॉट द मैक्सिमम वैल्यू विच वाज 0.5. डेरिवेटिव उसका लिया, वी गॉट 0.25. जब z 1 होता है, z is 1 over here, what will we get? We will get 0.73. But if we take the derivative, it will be 1 into 1 minus 1. हाँ जी, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट या इसमें कंफ्यूजन है कोई? जी सर 0 ही होगा ना सर. पक्की बात है ना? जी जी सर. पहले क्यों कुछ और निकला था? सर वो मैं नहीं था, वो हमजा था. कोई बात नहीं, लेकिन हमजा ये यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि इस कैलकुलेशन को ना आपने भूलना नहीं है. एक और कर लें, फिर अब आपने मुझे डरा दिया. एक और कर लें ताकि मनान भी खुश हो जाएंगे. तो 0.73 नहीं आया तो आपने 1 This is what you have to calculate. If z is equal to 0.01, ये चलें छोड़ें, let's not waste time on this. You can do it on your own. Just remember that forward propagation में we got the answer 0.73. Back propagation में we had to take the derivative and it gives us this thing. और इसी का ग्राफ जो है वो मैंने आपको ये ड्रॉ करके दिखाया हुआ है. Just remember that. Now we are going to do a quick example. Let's see if we can find it out and then we shall proceed further. आज के लिए we are going to use a simpler network. If you have सर ऊपर 0.73 के साथ नहीं था, उसे प्रोसीड करना चाहिए. आपने वंस क्यों लिखे हैं सर? सोचें, सोचें, find the answer and then give me the answer. This is a question for you people. Okay, so let us have a simple network. We shall have the submission and the activation done in just one of these.
We are going to have the input. M लिखें, W लिखें, it does not make any difference. And then the bias. We will have summation के अंदर क्या होगा? WX plus B. And then we will give it to the sigmoid activation and get some output. So here we will get Z. यहाँ इसको intermediate ये छोटा सा मैंने लिख दिया. Then Z will be given to the activation and we will get the output. Let's say it is Y. So Z is WX plus B and Y is sigmoid of Z. Now let us put some values and see if we can do a calculation. Let's say this is 0.8, the weight is 0.5 and the bias is 0.2. This means Z is equal to WX 0.5 multiplied with 0.8 plus 0.2. 0.5 into 0.8, 0.04, 0.4 plus 0.2. 0.8 का आधा हमने लेना है, that will be 0.4 plus 0.2, this is 0.6. And then we have to get the output, and that will be sigmoid of 0.6, which is equal to, the answer बताएं इसका, what is the 0.64. 0. ये कैलकुलेट कर लें, ये 3 प्लेसेस तक जो है ना फर्क आता है. 0.645 सर. वेरी गुड. ये आपने पिछले नोट्स भी देखे होंगे. 0.645. All right. Excellent. Let's suppose we wanted the target to be 1. एक इसके बाद फिर हम और एग्जांपल करेंगे. Let's say the target was equal to 1. This implies the error is equal to 1 minus 0.645 और वो हमारे पास आ जाएगा 0.355. सर जी ये जो हमने माइनस करना होता है वो सिर्फ 0.6 नहीं करेंगे, क्योंकि y प्रेडिक्टेड तुम्हारा 0.6 है ना सिर्फ. अब हमारे पास आउटपुट कहाँ आ रही है? y प्रेडिक्टेड नहीं है, दिस इज z. ये जो है ये सर हमारा mx प्लस b ही है ना. नहीं, उसको आगे एक्टिवेट भी कर दिया ना. वी हैव, दिस इज नॉट लीनियर रिग्रेशन. अभी तो ये सारा समझाया आपको कि नाउ वी आर गोइंग टू सी द इफेक्ट ऑफ दिस लॉजिस्टिक कि यहां तक z था, ये हमने z दिया. z को जब एक्टिवेट किया है तो वी गॉट दिस 0.645. ओके सर. आप यहां तक समझ रहे थे. दिस इज द z and y is the sigmoid of z. So this is y. इसको लिख भी देता हूं मैं दोबारा. This is y. So error will be target minus y.
and that is 0.335. 355. All right, so going back step by step. अब जरा थोड़ा सा इसको जल्दी कर लें because we have only 10 more minutes left. Let's suppose we are here. Error हमने calculate किया. We got this as the final error, and this is because of the output y. Y is the output. So if I write the error with respect to y, this is going to be what? 0.355. Then this output with respect to the z is 0.355 multiplied with 1 minus 0.355. Derivative अभी हम देख के आए हैं, and this will be equal to what? 0.645 into 0.355, 0.18 के करीब, तो आधा आता 0.21. 0.22 सर. 0.22. Now the error with respect to one of the inputs of z. अब z हमने कर लिया था, अब z से पीछे that is the w जो हम handle कर सकते हैं, will be equal to partial of the error with respect to y multiplied with partial of y with respect to z multiplied by, and this is going to be equal to, सबसे पहले value 0.335. Let me change the color. Multiplied with ये था 0.22 multiplied with w. ये हमने calculate नहीं किया, but just know that it was okay. Quick quiz. What was z with respect to w? Quick quiz है ये, grade A के लिए quick quiz. You have 10 seconds. Now you have 2 seconds. What is this thing? आधे बच्चे जो मोजे के इंतजार में बैठे हुए हैं, what is this? The answer of this. एक आंसर आना चाहिए. If you change the answer, you will not get any marks. Quickly, जल्दी बताएं. सर जो हमारा ये ऊपर हमने कैलकुलेट किया था, जैसे ये 0.6 के बाद हमारा y आया था सिग्मॉइड वाला सर. देखें, हमने ये कैलकुलेशन कर ली. जी सर. ये वाली कैलकुलेशन कर ली, ये वाली कर ली. What is z with respect to w? सर जैसे ये जो हमने 0.64 ऊपर फाइंड किया था सर. किधर? सर ये ऊपर फाइंड नहीं किया हुआ, जैसे ये हमने ऊपर y नहीं फाइंड किया, जिसे हम सर z कह रहे हैं. वैल्यूज उसमें सर वही जाएगी ना जो हम 0.6 फाइंड करेंगे सर. कौन सी फाइंड करेंगे? सर जी mx प्लस b हमने फाइंड की ना 0.6. कर लिया? वो सर जी 0.6 जब हम इनपुट में देंगे तो वो z ही जाएगा ना सर उसे. No. What was the contribution of z? What was the contribution in z because of w? 0.5. 0.5 अब ये सारे जो है ना, ये गौर से देख लें, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है. हसनैन, आपने भी आई डोंट नो हाउ यू गॉट इट कंफ्यूज्ड. आंसर हमारे पास z का आया 0.6, बट वी हैव टू सी
how we got 0.6 because of W. What was the contribution? अब कैसे करेंगे? Let me scroll up, up and up and up and up, and this is the contribution of the W. So we will have the X. ये आप पढ़ के आए हुए हैं. I don't know why you have forgotten it, but कोई बात नहीं. So the value of X over here is 0.8. This is the calculation. And now to get the answer, सर वो 0.355 है, आपने 0.335 लिखा हुआ है सर. 0.06248 आंसर है मेरे पास. okay, 355. All right, very good. So the answer is 0.06. 0.06. ठीक हो गया, 0.06. साथ ही साथ error with respect to B is going to be what? सर ये ऊपर वाला बाकी सारा सेम नहीं रहेगा? ये सेम ही मैं लिख रहा हूँ जी सर. और बस वो x की जगह b आ जाएगा हमारा इस दफा से. यहाँ हमारे एक और क्वेश्चन. अब क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि व्हाट इज दिस? ओके, अगेन स्क्रॉलिंग अप एंड अप एंड अप सर एंड वो अप. इंटरसेप्ट एंड स्लोप वाला जो आप बता रहे थे. यस, अब ये देखें कि इतने सारे का था 2r, ये सारा कुछ मल्टीप्लाइड विद 1. ये एंड पे जो 1 आया था. ऑल राइट, नॉट ऑल राइट? यस सर. ये वाली चीज. ओके, आप लोगों ने डरा दिया मुझे. सो दिस विल बी 0.355. हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ, मल्टीप्लाइड विद 0.22, एंड दिस विल गिव अस जी. मल्टीप्लाई करके जवाब दे दें जल्दी से, जल्दी कर लें, लास्ट 2 मिनट्स. तो 0.355 इंटू 0.22 कितना हो जाएगा? 0.7 के करीब आना चाहिए ये. 0.07. पक्की बात है? All right. And why did we do all these calculations? Nobody knows the answer to that. थोड़ा सा इसको फिट कर लें पेज पे so that we have it in front of us. Initially we started with x की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, so this is going to remain as it is. इसे हम चेंज नहीं कर सकते. This is the input feature. We can only work with the slope and the intercept. So we are going to modify these based on whatever we have calculated. एक हमारे पास वैल्यू ये आ गई है, एक हमारे पास वैल्यू ये आ गई है. Now let us assume if the learning rate, जो अल्फा आप पढ़ के आए हैं, कोई भी नाम हो सकता है, इसको हम कर लेते हैं जल्दी के लिए 0.5. Then W new is equal to W old minus the
alpha into partial of the error with respect to W, और ये हमारे पास क्या आया, W old was 0.5 माइनस करेंगे इसमें से 0.5 multiplied with 0.06 and you will get the updated W. अब ये क्या आएगा आंसर? सर ये आपने W old पे 0.5 कैसे ले लिया? ये ऊपर लिखा हुआ है. We started with W equal to 0.5 और B हमने लिखा था 0.2. ये पुरानी वैल्यूज है. We started with these. जी, what will be the answer? 0.3 आ जाएगा ना इसको. 6 का आधा 0.3 हो जाएगा. 0.5 minus 0.3 0.47. So this is the updated W. Similarly, updated B निकाल लेते हैं. B new will be B old minus this error with respect to B, and this is going to be, पहले B क्या था, 0.2 multiplied with 0.5 which is the learning rate, और ये हमने क्या निकाला है, 0.07. So what do you get as the answer? 0.07 का 0.035 into 0.2, 0.07 ही आ जाएगा. जी, Sir, 7 multiplied by 10 raised to power minus 3. है 0 point. Sir, दूसरी Oh, नोटेशन में आ रहा है सर ये 7 multiply. multiplied by Oh, sorry. ये multiply करवा रहे हैं आप. This has to be subtracted. 0.16. जी, Sir, 0. 0.165. So this is the updated B. ये हमने की है 1 iteration. Forward propagation में we calculated the output over here Y, or back propagation में we have done 1 iteration. Now what I want you people to do is use these values and calculate the error again. एक iteration आपने करनी है. This is what you people have to do. So that's the end of the lecture for today. Next time we shall start from here and try to do the same back propagation with a more complex network. सर Okay. वो आपने एक चीज नहीं बताई जो आपने ऊपर z is equal to 1 रखा था और आपने 1.1 minus 1 जब आपने उसका डेरिवेटिव फाइंड किया था. जी वो आपने करना है ना फाइंड. मैंने क्यों बताना है वो? चलिए ठीक है. वो तो फाइनल टर्म का क्वेश्चन है सर जी सर एक्सक्यूज मी सर, वो मेरा इंटरनेट बंद हो गया था सर। आपने यहाँ पे 0.5 क्यों लिया है सर? यहाँ पे 0.06 नहीं आना चाहिए। क्या चीज सर जी ये थोड़ा कंफ्यूज कर गया। ये W old जो था सर हमारा, देखिए W old हमने जो स्टार्ट किया था, W old क्या था? वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर। यस सर दिस इज W old। एंड देन सर ठीक है सर, वो मुझे हाँ ये ओके पूरा पेज, लेट मी शो यू द होल पेज, फिर आपको जी सर वो आप बिल्कुल क्लियर हो गया। अच्छा अब आप लोगों ने करना क्या है, पहले हमने कैलकुलेट किया था विद 0.5 वेट
W and 0.2 बायस। अब हमने अपडेट करके दो वैल्यूज नहीं निकालनी है। यूजिंग दीज वैल्यूज अगेन कैलकुलेट द एरर, पूरा एंड टू एंड लेके जाना है इसको, एंड देन बैक प्रोपेगेट and see whether you get some better result or not. All right, so this is what you people have to do. That's it for today's lecture. Thank you, and that's it. Thank you. एक्सक्यूज मी सर। जी उजैर। सर मैंने एक रिक्वेस्ट ये करनी थी कि असाइनमेंट के मार्क्स फुल एंड फाइनल क्लियर हो गए हैं, अब या उसमें कुछ हो सकता है? जैसे आप कहते हैं। नहीं सर, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि उसके असाइनमेंट। यू आर वन ऑफ द गुड स्टूडेंट्स, आप क्या चाहते हैं? सर मेरा असाइनमेंट 1 और 2 दोनों का ही इशू था, तो एक हम्बल सी रिक्वेस्ट थी कि अगर उसका कुछ हो जाए प्लीज। हो जाएगा, नो वरीज। थैंक यू वेरी मच सर। यस सर, बाकी ने भी मेल्स की थी सर, उनकी अभी तक सुनवाई नहीं हुई सर, तारीख पे तारीख मिल रही है सर। किसकी? नहीं सर, वो असाइनमेंट्स की भी, और वो आपने कहा था किसी का